Next trend is metallic and non-metallic character. In the last video I have told you that electronegativity is non-metallic character and electropositivity is metallic character. Now जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैरी करती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी वैसे ही वैरी करता है, और जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैरी करती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी वैसे ही फॉलो करता है। टॉप टू बॉटम हम जानते हैं, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब ध्यान रखो, metals are electron donors, and you know, as you are moving top to bottom, electropositivity increases. Electropositivity means the power to lose electron. So the atoms present at the bottom of the group are easily donating electrons, hence they have a stronger metallic character and higher electropositivity, lesser electronegativity. Moving left to right. As you know, from moving left to right, electronegativity increases, means the power to gain electron increases. So non-metallic character increases. And non-metals are बच्चों electron gainers. So electronegativity is the power to gain electron. तो लेफ़्ट टू राइट आप जैसे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है दैट विल इंक्रीज, हेंस द नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल ऑल्सो इंक्रीज. एंड द लास्ट ट्रेंड इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. मतलब when these elements form oxides, what are their nature? There can be two natures, acidic nature and basic nature. ठीक है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दोज आर एसिडिक इन नेचर. नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ओके, so when you are moving top to bottom in the group, you find that the metallic character is increasing. Metallic character is increasing, that means metals का क्या नेचर होता है? मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक. दैट मीन्स बेसिक नेचर of metal oxides are increasing because metallic character is increasing. Left to right, as you know, non metallic character is increasing. तो नॉन मेटल्स का जो नेचर होता है एसिडिक होता है. सो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आर इंक्रीजिंग. So these last properties of electronegativity, positivity, non-metallic, metallic character, acidic nature of oxide, basic nature of oxides are interrelated. Finally, I can give you one final this thing, shorthand representation. हमने जितने भी trends पढ़े हैं, let us write all together in a group. First, we have learnt about atomic size. In a group, atomic size increases. In a group, valence electrons remain constant. In a group, if valence electrons are constant, valency is also constant. Electronegativity, that is a power to lose electron, decreases. Electropositivity, that is a power to lose electron, increases because the atomic size increase, so it can lose the electron easily because nucleus attraction कम हो गया. Electropositivity increases. Now electronegativity is directly proportional to non-metallic character, and non-metal character is directly proportional to acidic nature of oxide.
ठीक. और electropositivity is directly proportional to metallic character and metallic character is directly proportional to basic nature of oxides. अब क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी कम होगा और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी डिक्रीज होगा. बट टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है. दैट मीन्स metallic nature will increase or metallic character will increase and basic nature of oxides will also increase. So this is all we have learned in a group. Now let's see about the period. Same trends. Atomic size decreases. Valence electrons increases from 1 to 8. Valency changes from 1 to 4, then to 0. Then ये आपको रिलेशन याद रखना है. इलेक्ट्रो negativity increases, non-metallic character increases and acidic nature of oxides increases, while electropositivity decreases, metallic character decreases and basic nature of oxides decreases. So this way you can make the complete shorthand representation of all the trends. In the next video I'll be telling you some questions and how you can apply the concepts of trends on those questions.